project. They are Sir Asifullah, he's in charge of the dialysis unit, and he was supervising us. I myself, Dr. Richard, I was leading the clinical audit. The data collections, it was done by Dr. Amir, Dr. Imtiaz, and Dr. Wali. They were our house officer in the medical aid unit. And Dr. Sabisha, he's the DMO in medical aid unit who helped in the manuscript writing and in the presentation too. The background and rationale of getting this clinical audit was the hemodialysis patient, they are at high risk of blood-borne infections, especially hepatitis C, because of the repeated vascular access and frequent exposure to the healthcare environment. So the preventive measure, the effective one is always the hand hygiene. The compliance with the hand hygiene, it remains variable among the healthcare staff. The local data of the KDA hospitals, it shows that there is an ongoing HCV conversion. This highlights the importance of the need for preventive measures. The aim of the clinical audit was to assess the hand hygiene compliance among healthcare staff in the hemodialysis unit in the KDA hospital and identify if there is any area for improvement so that the risk of the HCV transmission can be reduced. The objectives of the clinical audit were to assess the current hand hygiene compliance. We have to compare it with the NICE standard, identify any barrier that is affecting the compliance, and we can improve the compliance through an action plan which we need to develop and implement. Actually, the clinical audit is always, we have to compare your practice with the standard practice. The standard criteria was the NICE guideline on infection prevention and control. The criteria were, so there are actually 5 movements in which a person should have a hand hygiene so that the risk of transmission is reduced. The first one is before touching with the patient, before cleaning or aseptic procedure, after touching the patient, after body fluid exposure and risk, and the last is after touching patient's surroundings. So one need to make sure that their hands are completely clean before and after these steps. These are the opportunities. The other thing is how can we have the hand hygiene practice can be done. It is either through the alcohol-based hand rub, which is the sanitizer, if your hands are completely clean, because it's a quick and effective way. The other thing is if your hands are visibly soiled, like they are dirty, and you are exposed to the body fluids or blood, then you need to clean it with the soap and the water. So in order to have these practices to be done, one need to make sure that there is an available dispenser of the hand sanitizer available, and there should be a sink and paper towel. The target compliance is it should be more than 90%. The methodology of the audit was, it was a prospective audit. The setting, it was in the dialysis unit. The study population, there were the nursing staff, the dialysis technician, and the plan was to observe the doctor, but since the doctor, Sir Rahman, he was our supervisor, so we had to exclude him. The data collection. There was a structured checklist which was filled by the house officer, and it was based on the NICE standard. It covered all the 5 movements for hand hygiene, and the observations were carried out during the routine dialysis session. The sample size, it was 110 observations. After collecting the data, it was analyzed, and the analysis, it was done for each opportunity. As I have already explained to you, the opportunities, the 5 opportunities. So the compliance rate was calculated, and it was compared with the NICE standard. We had to identify the areas why the compliance is poor, and then there was a qualitative feedback collected from the nursing staff, the barrier to identify the barrier. We tried our best, it was 115 responses, we tried our best to cover all the shifts, although in the morning, the evening, 40% was in the evening, 35.7% covered the morning, and in the night it was 24.3%. The participant majority that we observed, they were the nursing staff, 56.5% were the nursing staff, and allied students, they were 38.3%. All the patients that we observed, unfortunately, they were
hepatitis C positive 80%. So I need you to keep this in mind that 80% that we observed the patient, they were hepatitis C positive, and if the hand hygiene compliance was quickly done by the nursing staff, yes or no, you will be knowing it in the next slide. The type of access to all the patient, it was EV fistula. The procedures that were observed by the students, they were the cannulation, the connection, the dressing change, the decannulation, disconnection, the medication administration, line flushes, and the other. So whether the hand hygiene was performed by the nursing staff, it was 65.2%, although the target was more than 90%. And in the 34% of the cases, it was not performed. The method used for hand hygiene, it was inadequate in 56.5%, and it was adequate in 27.8%. So hand hygiene movements. Before touching the patient, the frequency it was 32.2%. Out of 40 people, 37 they were washing their hand before touching the patient. And before aseptic procedure, it was 37%. After body fluid exposure, it was 36%. The poor compliance rate are in the two area. After touching the patient, the hand hygiene was not adequate, and after touching the patient surrounding. These are all the infrastructure, if it was available, yes or no. The EVHR dispenser, was it available at the point of care within the arm reach? No, it was not at all in the 100%. Whether they were full and functional since it was not available, the answer is no. Hand hygiene poster and reminder, was that visible in the dialysis center? No, in 100% of the cases. Whether the sink was available nearby? Yes, in 44% of the cases, because the first 5 beds of the dialysis center, they are near to the washroom. The sink is available in the washroom. So in 44% of the cases, you can say that yes, the sink was available. And the soap, if it was present, most of the cases, it was 71%. The paper towel and hand dryer, whether it was available, no, it was in 60% of the cases, it was not available. The nursing staff, they were using their own clothes. Whether the gloves they were used, in 77% of the cases it was not used, and they were not even changed appropriately if in the 3% of the cases if they were used. So the hand visible is right. Most of the nursing staff and allied students, they had the clean hand. It was 96% clear. And if there was any contaminated visible equipment, or if not clean between the patient, no, the environment was clean in 95% of the cases. The main barrier that why the compliance rate is decreased is mostly the three main causes is the workload. It's a lot of workload by the staff, and their staff are few in numbers. The other thing is there's lack of supplies over there, and time pressure, because they have to handle many patients at the same time. That is why carrying all these practices was difficult. The least factors that affected the compliance rate were they were considering gloves as a substitute in 11% of the cases. Skin irritation was not an issue. The lack of awareness and cultural practice norm is there. So it was up till then it was the first cycle of the audit. Like we had identified what is the compliance rate, how much is the practice going on, and we have this data, the rate. So the other part of the clinical audit goes after there are certain changes that is implemented. So what we want to recommend in order to identify, since we have, there is a significant gap which is identified. So the contributing factors were multiple. One was the system related, the other is the behavioral gap, and third is the lack of continuous monitoring. So if we target these points for the next audit cycle, there might be an improvement in the compliance rate. So the system related interventions are we have to make sure the availability of alcohol-based hand rub at every dialysis station. And there should be a continuous supply of soap, paper towel, and disposable gloves. Regular checking of the supplies by the assigned staff per shift. And there should be a functional and accessible sink.
and display of WHO 5 movement poster at point of care for them to for the reminder. The behavioral intervention. There should be a short training session for staff so that they can know the 5 WHO movement for hand hygiene. They should know the technique which is proper. In their training session, the misconception should be addressed that the gloves do not replace the hand hygiene. And since the seniors, they are always the role model for the juniors. So if the seniors are practicing the hand hygiene properly, the junior staff will follow them. The other thing is we have to promote the compliance, mainly these two factors, before and after the patient contact. The barriers should be acknowledged and it should be addressed, which were the time pressure, the workload, and the skin irritation. Monitoring and accountability. The regular monitoring of hand hygiene practices should be there by a member who is the hand hygiene champion in each shift. What he has to do is he had to continuously remind the other members in the shift to properly do the practices, and he should give a proper feedback proper regular feedback from the staff can be carried out through the clinical audit, and the compliance rate should be displayed in the unit so that they can know that poor compliance is not acceptable, and they should be encouraged that safety and accountability do matter. In conclusion, the last thing is hand hygiene compliance in the dialysis unit, it was suboptimal. Unfortunately, the modified factors, they were identified, and we can significantly improve the compliance if we target these factors through interventions, and then the continuous monitoring is necessary, and the re-audit is essential. So the next step is the re-audit. The last thing is improve hand hygiene. It will reduce the healthcare-associated infection and it will improve the patient safety. This was the conclusion of my clinical audit. So the last message that we all should know is save life through cleaning your hands and cleaning your hands. Do you have any questions for me? Regarding clinical audit, I'm sorry. ये आपने क्लिनिकल हैंड हाइजीन चैंपियन का लफ्ज क्यों पिछली स्लाइड से ये बात आगे तक हैंड हाइजीन चैंपियन का लफ्ज क्यों Sir, it was recommended in the guidelines, sir. So he's considered champion because. ये लफ्ज गाइडलाइन पर लिखा हुआ Yes, sir. So why they selected this champion word? Because he is practicing hand hygiene effectively and he's a role model, that's why he's a champion. So he is a role model, that's why the term Yes, is used champion. Any alternative? What that can be used? Huh? Hand hygiene champion की alternative terminology हो. Champion word is used for games usually. So winners जो होते हैं उनको champions कहा जाता है. मेडिकल टर्मिनोलॉजी मेडिकल फील्ड्स के अंदर चैंपियन का लफ्ज़ है. ठीक से आप बताएंगे ठीक आपने क्यों चूज किया है चैंपियन का वर्ड? सर इसलिए रोल मॉडल बनाने के लिए ताकि उसको एग्जाम्पल बनाया जाए कि ये एक अच्छा वो कर रहा है तो बाकी लोग भी उसको कॉपी करें. नहीं वो तो आपका आइडिया बड़ा अच्छा है ना. जी सर. लेकिन हम इसकी अल्टरनेटिव कौन सी वर्ड हो सकती है जो मेडिकल फील्ड के साथ ताल्लुक रखती है? यहाँ पर लोग लीडर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं. ये लीडर है, ये हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल है, चीफ एग्जीक्यूटिव है. ये अपने अपने वर्ड्स अपनी अपनी जगह पे फिट होते हैं. अब यहाँ पे हैंड हाइजीन प्रिंसिपल तो नहीं लिख सकते या हैंड हाइजीन मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी नहीं लिख सकते. वो एमएस होता है. यहाँ पे जो चैंपियन है ये वर्ड इसकी क्या अल्टरनेटिव सोच सकते हैं? बड़ा मेरा आइडिया है. मुझे गाइडलाइन फॉलो लिखा जी इसको कह सकते हैं हैंड हाइजीन एक्सपर्ट भी कह सकते हैं. हैंड हाइजीन एक्सपर्ट का लफ्ज़ भी आ सकता है. हैंड हाइजीन एक्सपर्ट तो हर एक बंदे को होना चाहिए, तो इसके लिए खास चैंपियन रखना. मतलब हैंड हाइजीन इज नॉट टेक्निक जिसको मतलब हर कोई सिर्फ मास्टर कर सकता है. जिस तरह एंडोस्कोपी या ब्रोंकोस्कोपी सिर्फ एक, हैंड हाइजीन तो हर एक बंदे, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, एवरीवन. ठीक है.
उसके लिए फॉर्मल ट्रेनिंग सब लोगों की. I completely agree with your suggestion, sir. But champion इसलिए required होते हैं because sometimes the other junior staff. यहाँ पे लफ्ज़ अगर आ जाए कि introduce a role model. Yes, sir. We can use the role model. Junior staff जो है वो compliant नहीं होते. They don't know the proper technique, especially सर ये students. इस तरह होता है ना कि अगर फॉर एग्जांपल किसी और फील्ड में जो है ना आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं फिर किसी और फील्ड का जो है ना बेस्ट उसमें डाल देते हैं. वी नो कि ये गेम्स वगैरह में स्पोर्ट्स में ये लफ्ज़ यूज़ होता है लेकिन चूंकि हमारी फील्ड में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है सो दिस हैज़ बीन दिस द वर्ड हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम देयर. ठीक हो सकता है पॉसिबल रोल मॉडल भी अच्छा लफ्ज़ है और ये आपने कहाँ से टॉपिक किया? Sir, standard clinical audit जो पहले हो चुकी हैं, standard criteria जो मैंने follow किया, that's nice guidelines, sir. सही. ये एक किस्म की रिकमेंडेशन है ना कि आप हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को इनकरेज करने के लिए आप अपने स्टाफ में इस तरह के जिस तरह हम बेस्ट पीजी अवार्ड देते होते हैं सो दैट एवरीबॉडी स्टार्ट वर्किंग या पीजी ऑफ द मंथ होता है इसी तरह जो है ये अपने स्टाफ को इनकरेज करने के लिए कि दे शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग बेस्ट हैंड हाइजीन. सो ये आप एक टर्मिनोलॉजी करते हैं और फिर एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द मंथ आप बताते हैं कि ही हैज़ या शी हैज़ प्रैक्टिसेस बेस्ट सो ही या शी इज हैंड हाइजीन चैंपियन. तो नेक्स्ट मंथ में और बहुत ज़्यादा अच्छा काम करेंगे. दे विल ट्राई टू बी चैंपियंस. सर क्योंकि डॉक्टर आसिफ हैं गेस्टो से तो क्योंकि HCV रिलेटेड सो वी कैन डिस्कस विद देम. द बेसिक एम ये था कि the HCV seroconversion is a universal problem in hemodialysis. Though even hepatitis B is also a problem, but the prevalence of hepatitis C is more as compared to the hepatitis B. What we are doing, most of the guideline ये कहती हैं कि आप जो सीरो कन्वर्जन या HCV पॉजिटिव पेशेंट हैं उनके लिए कोई आइसोलेशन की ज़रूरत नहीं. This is recommended by the CDC guideline. Practice this hand hygiene and all disinfecting protocol, universal protocol. And if you are practicing all these, इसके बाद मशीन को अलग करने की ज़रूरत नहीं. But we are doing segregation of this machine. We have dedicated HCV positive machine, but in spite of all effort, we are having very high seroconversion rates. What we are lacking, the costly thing mean हम machine को अलग कर देते हैं, room को अलग कर देते हैं. But what we are not doing this thing. हैंड हाइजीन का HCV की प्रिवेंशन में शायद इतना ज़्यादा वो हैंड हाइजीन तो जनरली हर एक इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए इम्पोर्टेंट है बट इन कंटेक्स्ट ऑफ HCV प्रोबेबली इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है आम लोगों की अंडरस्टैंडिंग है कि हम मशीन को अलग कर देंगे तो हम HCV ट्रांसमिशन को कम कर सकते हैं. इट्स नॉट ट्रू. और जो उनकी स्टडीज़ हुई हैं दैट इज़ नॉट ड्यू टू मशीन. अक्सर जो कल्प्रिट है जो हेपरिन की इंजेक्शन यूज़ होती थी एक मरीज़ के लिए आपने इस्तेमाल किया दूसरे के लिए इस्तेमाल किया ठीक है. बेशक इस स्टेज पे पेशेंट का HCV नेगेटिव आता है बट पेशेंट हैज़ बीन एक्सपोज्ड. हम हर एक पेशेंट को तो हम PCR नहीं करते स्ट्रेट अवे. तो उस पेशेंट वो शायद वायरीमिया हो लेकिन हमने एंटीबॉडीज़ की हैं वो थोड़ी सी बाद में आती हैं तो उसके साथ वो चेन स्टार्ट हो जाए ट्रांसमिशन का. तो हैंड हाइजीन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर दैट मच एक्सटेंट. और उसमें जो टेक्निकल प्रॉब्लम होगा HCV और मशीन को अलग करने का. एक मरीज़ HCV पॉजिटिव आ गया उनका PCR पॉजिटिव है आपने ट्रीट किया. अब HCV एंटीबॉडीज़ तो सारी ज़िंदगी पॉजिटिव रहेंगी लेकिन इसके साथ आपने बहुत बड़ा लिख दिया HCV पॉजिटिव ठीक है. अभी आप उनको HCV पॉजिटिव मशीन पे शिफ्ट कर देते हैं. अब मरीज़ भी रिलक्टेंट हो गया डॉक्टर साहब मैंने तो ट्रीटमेंट कर ली है अब मेरा PCR तो नेगेटिव है अगर इसको मैं एक्सपोज होऊंगा तो मुझे दोबारा हो जाएगा ठीक है. तो अब मरीज़ को इस बात के लिए कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो गया है कि आप HCV पॉजिटिव पे करें क्योंकि तो ट्रीटमेंट ले चुके हैं. और आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने स्टाफ को इस बात के लिए कन्विंस करना है कि HCV पॉजिटिव है बेशक आप वायरीमिक नहीं हैं लेकिन हम आपको HCV नेगेटिव मशीन पे करें तो आप अपने स्टाफ को भी कन्विंस नहीं कर सकते. तो ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाती है. अब जो वायरोलॉजी के कंटेक्स्ट में है तो HCV का वायरस मुकाबलतन बड़ा है तो इसके लिए अगर आप मशीन वो करते हैं अलग करते हैं दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. उसकी रिकमेंडेशंस नहीं. हाँ हेपेटाइटिस बी के लिए है तो ये इनकी सारी ओके. बट जितनी भी वो हुई है ना उसमें बाकायदा स्वॉब्स लिए गए ऑन द सर्फेसेस फ्रॉम द हैंड फ्रॉम द
machine, it was seen that hepatitis C virus remain on the surfaces for hours, 16 to 18 hours, and hepatitis B virus remain on the surface in hemodialysis for 7 to 9 days. And that was the most important reason. And you know, this vial, multi-dose vial, this has now been removed from the dialysis center. In our center, you have seen we are not using heparin. And now for medication purpose, they have made a separate station जहाँ पे वो हर needle से patient के लिए पहले से prepare करके उसको station side पे किया जाता है. But in spite of all doing this effort, HCV seroconversion is very high. इसमें सर्फेसेस पे रहना और हैंड हाइजीन को न फॉलो करना दैट वो इतना बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन ही डिफरेंट है. सर्फेसेस पे रहने से, हाथ पे टच करने से, और मरीज HCV नेगेटिव को हाथ लगाने से ये रूट ही नहीं है. No, it is not touching the patient. It is the connection side, like Madam Same Nikandi procedure has to a observe, connection, yeah. connecting and deconnecting the Right. fistula needles. फिर वो आप इंसर्ट करते हैं Patient पेशेंट. ने एक HCV पॉजिटिव पेशेंट को लिया, आपने देखा होगा Yes, sir. हैंड आर सोक्ड विद ब्लड, और फिर दूसरे पेशेंट को वो कर लेते हैं. So this is one of the reason, and even CDC guideline में even वो ये कहता है कि the bed sheets is kind of a minor risk of transmitting. And you will connect Five here. movements है. Even अगर आप patient के surrounding को भी touch करते हैं, you have to clean the hand before going out or before touching the another patient. For example, HCV positive patient मैंने देखे हैं, उसके surrounding मैंने touch किए, and then next patient पे मैं इन में से कोई भी एक procedure follow कर रही हूँ. So I am introducing the infection in the patient. वो तो फाइव सिनेरियोज आ जाते हैं जिसमें अपने हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस को देखें, बिफोर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर टचिंग सर्विसेज. वो तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, नॉट इन context of HCV. Yes, Not वो in आपकी the बात context सही है of कि HCV, but in the context of infection and Yes. HCV is an वो तो infection. यूनिवर्सल है, that is for everything, that is for everything. बिल्कुल वो आपकी बात सही है कि nosocomial infection is one of the main, second most common cause of mortality in hemodialysis dependent patient after the cardiovascular diseases. जो HCV की ट्रांसमिशन या सीरो कन्वर्जन है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, दैट इज एवरीवेयर. इस पे हमने स्टडीज भी की, मल्टी सेंटर, पेशावर, इस्लामाबाद, जो मिलिट्री हॉस्पिटल्स है, और कुछ डेटा हमने एबटाबाद से लिए. तो उसमें 25 to 30% पेशेंट्स जब उनको डायलिसिस स्टार्ट करते हैं, एक साल बाद जब देखते हैं तो उसमें 25 to 30 पेशेंट्स में ये HCV पॉजिटिव हो जाते हैं. तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी तो होती है ना इनको. वो तो उसमें मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आ गए, रिपीटेड इंजेक्शंस, रिपीटेड डायलिसिस, रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन्स. लेकिन सर अभी देखिए ना, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ से कार्ड देयर आर लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज है ट्रांसफ्यूजन की रेट्स. और इवन आपके मिलिट्री हॉस्पिटल में तो बिकॉज ऑफ द यूनिवर्सल सप्लाई ऑफ एरिथ्रोपोइटिन वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन बहुत कम होती है. ठीक है, तो उसके बावजूद यहाँ पे 2-3 पेशेंट हैं जिनकी कोई ट्रांसफ्यूजन हिस्ट्री नहीं है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग जीरो कन्वर्जन टू HCV आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द टाइम. लेकिन ऑडिट में मेन ये चीज़ नहीं है कि कोई ऑडिट नहीं है HCV कन्वर्जन के लिए, बट जो एक मॉडिफाइबल फैक्टर है हैंड हाइजीन, अगर उसको प्रैक्टिस किया जाए तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इट. मेन सिर्फ ये मकसद है. हम ये नहीं कह रहे, आपसे डिसएग्री नहीं कर रहे कि मल्टीपल फैक्टर्स जो हैं उनको आप इग्नोर करें और हैंड हाइजीन पे आपका फोकस है. बिल्कुल मल्टीपल फैक्टर्स हैं, उस पर भी क्लिनिकल ऑडिट होना चाहिए. जैसे सिरिंजेस बीच में चेंज हो गए कि नहीं, या सेम सिरिंजेस यूज किए जा रही है कि नहीं, इस पर भी क्लिनिकल ऑडिट किया जा सकता है. बट मेरा फोकस हैंड हाइजीन पे था बिकॉज इट्स रियली अ सिंपल थिंग. इफ इट कैन बी डन, कंप्लायंस रेट इस पर अगर ज़्यादा हो तो not only HCV but other diseases can be prevented. Not only to the dialysis patient but आसपास जितने भी अटेंडेंट हैं उनको वो भी सेफ हो सकते हैं. बिकॉज एक नर्सिंग स्टाफ जो है वो डॉक्टर के साथ भी हैंड शेक कर सकता है, तो दूसरे पेशेंट भी डॉक्टर भी सेफ हो सकते हैं थ्रू अ सिंपल मेथड विच इज हैंड हाइजीन. अभी जो सर हमारे पास ये मशीनें हैं ना, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में स्टार्ट करने और डायलिसिस को स्टार्ट करने से पहले वो डिसइंफेक्शन प्रोटोकॉल के बगैर जाती ही नहीं है. सो जितनी कॉस्टली मेजर्स हैं दैट हैज बीन डन, बट इन स्पाइट ऑफ दैट सीरो कन्वर्जन इज वेरी हाई. ये तो प्रॉब्लम है यूनिवर्सल, नॉट हियर. पूरी दुनिया में चीज़ें देखी गई. उनके पास क्या एविडेंस था ये जो
स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल उन्होंने किया है डायलिसिस के अंदर और हेड हाइजीन का, उनमें कुछ सीरो कन्वर्जन्स में कुछ चेंजेस देखिए? No, sir. So उनके स्टैंडर्ड उनकी कंप्लायंस रेट मोर देन 90% रहे हैं, जो स्टैंडर्ड बाकी की जगह पर हुई हैं प्राइवेट एरिया सेटअप में भी। इवन इफ दे एंटर इन द रूम तब भी जो है वो दे विल प्रैक्टिस हैंड हाइजीन। उनका तो हर पेशेंट के लिए ये प्रोटोकॉल है ना, वो तो हमारे जनरल मेडिसिन वार्ड में भी उनका ये प्रोटोकॉल चलता है। यस सर, समझ नॉट आ ओनली गई फॉर द डायलिसिस। सर? डायलिसिस में तो वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं। इवन एग्जामिनेशन से पहले एग्जामिनेशन के बाद सर ये हैंड करते हैं। बिल्कुल, एग्जाम में भी तो क्योंकि पेशेंट को टेस्ट करना सिर्फ उसके मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड नहीं है कि हम उसको जो है एग्जामिनेशन भी इज लाइक टचिंग द पेशेंट, तो उस वक्त भी आपको हैंड हाइजीन करनी चाहिए। और नेक्स्ट इसमें 3 सेइंग्स है ना, जॉइन हैंड्स एंड सेव लाइफ, CPR, सेव योर पेशेंट फ्रॉम योर हैंड्स एंड वॉश योर हैंड। ये इसमें एक और कोट है ना कि ये ICUs में ये जो डॉक्टर बोर्न इन्फेक्शन है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये RMI में ऑडिट होता था, स्टाफ से स्वाब लिए जाते, तो ये हमारे से इतना ज़्यादा ICU के स्टाफ में फिर उनको वॉशिंग के लिए स्पेसिफिक सॉल्यूशंस दिए जाते थे। और हर बेड के साथ एक वो सैनिटाइज़र होना चाहिए आइडियली हर जगह पे, खुसूसन क्रिटिकल केयर्स में। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देखिए, हैंड हाइजीन जो सबसे चीपर और सबसे इफ़ेक्टिव मोड ऑफ जो आप इन्फेक्शन प्रिवेंशन को कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में क्योंकि ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है तो हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। बाहर की दुनिया में तो ये हर एक इनकाउंटर से पेशेंट्स, इवन अगर आपका OPD का पेशेंट है, आप पहले हाथ साफ करते हैं और पेशेंट को देखते हैं, बाद में हाथ साफ करते हैं। जिस तरह कोविड आ गया था तो लोग थोड़ा सा सेंसिटाइज हो गए थे, ठीक है ना, जेब में सैनिटाइज़र रखो, ठीक है, OPD में रखो। अब इस चीज़ को फॉलो करना कितना पॉसिबल होगा? हमारे 70 OPD पेशेंट्स देखते हैं, 100 देखते हैं, तो उसमें हम कितना फॉलो कर सकते हैं? लेकिन कम से कम वार्ड में जो पेशेंट्स हैं या जो हम प्रोसीजर्स करते हैं, इसके लिए मैंडेटरी होना चाहिए। पाकिस्तान में तो ये भी चीपर नहीं है डॉक्टर आसिफ, बिकॉज अगर आपके पास 40 बेड्स है, सो यू नीड 40 हैंड सैनिटाइजर लाइक दिस विद ईच बेड। हर 3 बेड बाद जो है ना, आपको 3 से 4 बेड बाद जो है आपको सिंक चाहिए वाटर लगू वाला, ठीक है। तो पाकिस्तान में ये भी सस्ता नहीं है। पानी नहीं और है। फिर ये इनमें से कितनी चोरी होंगे वो अलग बात है। इसकी प्रोविज़न और फिर हमारी तरफ से नेग्लिजेंस, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मतलब माफ करें, हम जिस तरह प्रोसीजर्स करते हैं एंडोस्कोपी में, उसमें भी बाज़ों का टाइम नहीं होता, बाज़ों का ग्लव्स नहीं होती, तो एक पेशेंट को हमने स्कोप किया, फिर उसी ग्लव्स ट्रेनिंग ये वो आखिरी स्लाइड पे जाए। आखिरी बिल्कुल आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे? Sir, can you explain?